students, in last class we have completed 2 question answers, long answer type. Okay, so today I am going to explain you the third and fourth question answers as per your revision paper. So why the blood is called a connective tissue? Ramu said that the blood is a fluid connective tissue of the body. Give reason. Blood को connective tissue क्यों बोले पूछ रही. ओके, और रामू बोले कि ब्लड फ्लूइड है, बोले फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, बोले लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. वाई? गिव रीजंस. सो लेट्स सी द आंसर. ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग सेल्स. ब्लड क्या है बोल रहे? कनेक्टिव टिश्यू है बोल रहे. इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग सेल्स. ओके, ईच ऑफ दिस सेल टाइप हैव डिफरेंट फंक्शन. हर सेल का क्या है बोल रहे हैं? डिफरेंट फंक्शन है बोल रहे. दीज सेल्स आर कॉल्ड ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पसल्स. वो सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं? ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पसल्स बोल रहे हैं. द इंटरसेल्यूलर फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स इज कॉल्ड प्लाज्मा. इंटरसेल्यूलर फ्लूइड किसको बोल रहे हैं यहाँ पर अपन? फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स. सेल्स के बीच में जो है लिक्विड फ्लूइड. ओके, उसको हम इंटरसेल्यूलर फ्लूइड बोल रहे हैं. इंटर इज इन बिटवीन cellular cell, intercellular fluid. Okay, that intercellular fluid is known as plasma here. In all other tissues the volume of intercellular fluid is very small. In blood the volume of intercellular fluid is very high. In blood the cells are not attached to each other. Okay, सब टिश्यूज की जब हम बात करेंगे तो उसमें जो है इंटरसेल्यूलर फ्लूइड की वॉल्यूम बहुत कम है बोल रहे. इट इज़ वेरी स्मॉल. ओके, whereas in blood the volume of intercellular fluid is very high. Okay, और ब्लड में सेल्स जो है ब्लड सेल्स एक दूसरे को अटैच नहीं रहते. ओके, दे आर नॉट अटैच टू ईच अदर. These cells freely float in the blood and they travel along with the blood to different tissues in the body. In fact, blood is called fluid tissue of the body. ये सेल्स जो है ब्लड सेल्स ब्लड में फ्रीली फ्लोट होते. ओके, और ब्लड के साथ डिफरेंट टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट होते, ट्रैवल होते. They travel along with blood to different tissues in the body. So in fact असल में ब्लड को हम क्या बोलेंगे? fluid tissue of the body. Okay, understand? Yes. Now next question. So this is your fourth question. Okay, the passage given in your revision paper, you have to read the passage, then you have to answer the following questions. So here given passage is here. Okay, so let's see. Red blood cells, also known as erythrocytes, they are red in color. They have red color protein called hemoglobin. Because of hemoglobin, blood is red in color. Okay, it helps in the transport of oxygen and carbon dioxide. 1 ml of human blood has about 5 million of red blood cells which live for 120 days in blood. Now I have read the passage. Now let's see the question and answers. What is the other name for red blood cells? What we have said here, red blood cells are known as erythrocyte. So erythrocyte is the other name for RBC, red blood cell. Which protein is present in RBC? We have said here red color protein called hemoglobin. Red color protein called hemoglobin present in red blood cells. RBC full form red blood cells. Okay, now what is the function of hemoglobin? What is the function here? Hemoglobin, because of hemoglobin only blood is red in color. Okay, and its function is to transport oxygen and carbon dioxide. Here it helps to transport of oxygen and carbon dioxide. Okay, transport carbon dioxide and oxygen. What is the lifespan of RBC? Which live only for 120 days in blood. Yes, we have written here lifespan of RBC is 120 days. What is the number of RBC in blood per 1 ml of blood? Yes, we have seen here in the passage, right? 1 ml of human blood has about 5 million of RBC. 5 million of RBC per 1 ml. Okay, thank you.